Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The North Wind and the Sun. So let's begin the chapter. Chapter 3, The North Wind and the Sun. Strength in Wisdom. Value talk. Gentleness is a strong hand with a soft touch. It is a tender and compassionate approach towards others' weakness and limitations. A gentle person still speaks truth, sometimes even painful truth, but in doing so he minds his tone so that the truth can be well received. जेंटलनेस इज एक स्ट्रॉन्ग हैंड विद अ सॉफ्ट टच। कि आप किसी से जेंटल बिहेवियर रखते हो तो एक बहुत अच्छी चीज होती है एंड इट विल लाइक कंपैशनेट, इट इज अ वेरी सॉफ्ट अप्रोच टूवर्ड्स अदर्स कि दूसरे की कमजोरी का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। एंड अ जेंटल पर्सन, जो एक पर्सन बहुत ही शरीफ होता है, वो हमेशा सच ही बोलता है। एंड समवन, कई बार हमारे सच सुनना बहुत ही पेनफुल होता है। It's very difficult to speak to truth and it's very difficult to accept the truth. But ऐसा करने से he minds his tone so that the truth can be well received. जब वो कोई सच बता रहा होता है तो वो अपनी टोन को ऐसे इतना लिमिटेड रखता है कि सच को सुन सके दूसरा बंदा, और सच सुनने के बाद भी वो उसको साथ गलत बिहेवियर ना करे। The north wind and the sun had a quarrel about which of them was the stronger. अब नॉर्थ की हवा और सन के बीच में एक झगड़ा होता है, जिनमें से ये बात को देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है। While they were disputing with great heat and fury, a traveler passed through the street wearing a cloak. तो जब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, बहुत गर्मी और ठंड के बीच में, तो ये एक ट्रैवलर वहां से निकल रहा था। Let us agree, said the sun. तो सन ने कहा ठीक है, हम एग्री करते हैं। Whoever separates the clock from the traveler is a stronger. अब उसने जो वो क्लॉक पहन रखा था, उसने कहा जो इस क्लॉक को उतरवा देगा ट्रैवलर के ऊपर से, वही स्ट्रॉन्गर होगा। नॉर्थ विंड सेड एंग्रीली, वेरी वेल। नॉर्थ विंड ने कहा ठीक है। इमीडिएटली इट सेंट अ कोल्ड एंड वायलेंट ब्लास्ट ऑफ एयर अगेंस्ट द ट्रैवलर। अब उसने ट्रैवलर की टुवर्ड्स बड़ी तेज हवा फेंकी, बहुत ही तेज तूफान जैसी, और उसको ऐसे की तो उड़ जाए। ड्यू टू द फोर्सफुल ऑफ विंड, द एंड्स ऑफ द क्लॉक फ्लैप्ड अगेंस्ट द ट्रैवलर्स बॉडी। अब वो विंड की फोर्स की वजह से वो फ्लैप हो गए उसकी बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट ही इमीडिएटली रैप्ड इट टाइटली अराउंड द हिमसेल्फ। लेकिन उसने इमीडिएटली उसको रैप कर लिया वापस की बॉडी पर। सून देयर वाज another rush of wind, but the harder the wind blew, he held his clock to him just as tightly. दोबारा से इतनी और भी तेज हवा को करा, लेकिन जितनी तेज हवा चल रही थी उतनी ही तेजी से उसने अपने क्लॉक को पकड़ लिया ताकि वो टाइटली वो उड़ ना पाए। द नॉर्थ विंड एंग्रीली ट्राइड टू टीयर द क्लॉक अवे बट ऑल इट्स एफर्ट्स फेल। अब उसने बहुत कोशिश करा कि उसको किस तरीके से टीयर कर दे, वो फट जाए तो वो निकल जाए उसकी बॉडी पर से, पर वो उसके एफर्ट्स फेल हो गए। देन द सन बिगेन टू शाइन। तब सन शाइन करने लगा। एट फर्स्ट इट्स बीम्स वर जेंटल। पहले तो उसकी रोशनी बहुत ही सही अच्छी लग रही थी। इन द प्लेजेंट वार्मथ आफ्टर द बिटर कोल्ड of the north wind, the traveler unfastened his cloak and let it hang loosely from his shoulders. अब जब नॉर्थ विंड इतनी तेज चल रही थी तो अब उसको उसके बाद थोड़ी सी उसको जो सन की रोशनी थी, गर्मी थी, वो थोड़ी ठीक लग रही थी, तो ट्रैवलर ने उसको थोड़ा सा ढीला कर लिया और निकाल कर अपनी शोल्डर्स पर रख लिया। सन रेज नाउ बिकेम हॉटर। अब सन की रेज और ज्यादा गर्म हो गई, तो द मैन टुक ऑफ हिज हैट एंड वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज ब्रो। अब उसने क्या करा, अपना हैट उतारा और हैट उतार के अपने पसीने पोंछे। At last he became so restless with the heat of the sun that he took off his cloak and lay down in the shade of a tree by a roadside. और बाद में चलते चलते उसको इसकी रोशनी सन की हीट से इतनी गर्मी लगने लगी कि उसने फाइनली अपना क्लॉक रिमूव किया और एक शेड में जाकर पेड़ की बैठ गया। The gentle warmth of the sun succeeded in making the traveler of his clock. The north wind had to accept it strictly. तो जो गर्माहट थी वो ज्यादा नहीं थी सन की। सन ने अपनी ज्यादा गर्माहट नहीं दिखाई, जितनी बेसिक होती है, लेकिन वो चलने की वजह से, थोड़ी सी गर्मी की वजह से उसको थकान और पसीने आ गए, जिसकी वजह से ट्रैवलर ने उसको रिमूव किया। तो नॉर्थ विंड को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी हार को एक्सेप्ट करना पड़ा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इट इज अ गुड थिंग टू बी स्ट्रांग बट इट इज रॉन्ग टू बी प्राउड ऑफ इट। मतलब स्ट्रांग होना एक अच्छी चीज है, बट अपनी ही किसी स्ट्रेंथ को अपना प्राउड बना लेना, उस पर घमंड करना, दैट वाज रॉन्ग।
Now let's do the exercise. Let's do the tick the correct option. The north wind and the sun had a quarrel about who is stronger. The traveler was wrapped in a cloak. The north wind angrily tried to tear the cloak. The sun's rays now became hotter. The sun succeeded in making the traveler off his cloak. Now let's do fill in the blanks with the words given below. The north dash and the dash had a quarrel. So north wind and the sun. They were disputing with great dash and dash. So they were disputing with great fury and he immediately wrapped it dash around himself. He immediately wrapped it tightly. The dash took off his hat. The man. The north wind had to accept his defeat. Now let's do match the following. Sun, shine, wind, blow, traveler, clock, quarrel, the north wind and the sun, and defeated the north wind. Now let's do the next exercise. Now let's do the complete the words. The first is wind. This is stronger. This is traveler. This is pleasant. This is warmth. And the next is cloak. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next chapter, the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.